भोपाल गैस ट्रेजेडी को आज 40 साल हो गए हैं, बट इवन आफ्टर दीज 40 years, the air in Bhopal is not the same as it was before that tragic night in 1984. दिसंबर 2-3 की रात को in 1984, around 40 tons of highly toxic methyl isocyanate it got escaped from the Union Carbide India Limited, which was a pesticide plant set up in Bhopal. And that toxic MIC, it choked the entire city within hours. The toxic legacy of methyl isocyanate MIC gas, it continues to affect the generations. Survivors are still suffering from the diseases affecting their nervous systems and reproductive health. But the question arises कि MIC ने ऐसा क्या किया जिसकी रिकवरी आज भी नामुमकिन है? According to a study by ICMR in 2010, methyl isocyanate (MIC) जिसको इनहेल करने से और जिसके हवा में रहने से आज तक विक्टिम्स की फ्यूचर जनरेशन सफर कर रही हैं, that MIC caused N-carbomylation and S-carbomylation of proteins and tissues in the survivors. Carbomylation तब होता है जब हमारी बॉडी में प्रोटीन्स like hemoglobin, which is essential for oxygen transport, they are structurally altered that impaired their function. Proteins and tissues के स्ट्रक्चर में परमानेंट चेंज हो जाता है, which disrupts the normal body functions and making the recovery impossible. इसके अलावा डिजास्टर के इमीडिएटली बाद अराउंड 700 बॉडीज का ऑटोप्सी हुआ, जिसमें ये पता चला कि MIC गैस also produced हाइड्रोजन साइनाइड which was a deadly byproduct. यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड उस टाइम पे इस बात को डिनाई करती रही कि MIC के साथ हाइड्रोजन साइनाइड भी घुला हुआ था और इसी की वजह से उस टाइम पे विक्टिम्स को इमीडिएट एंटीडोटल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया था. कुछ टाइम के बाद द एडमिनिस्ट्रेशन began with the sodium thiosulfate injections, which is an effective antidote for cyanide poisoning, जो साइनाइड को थायोसाइनेट में चेंज करता है, which is harmless compound and it released during the person's urine that led to the detoxification of the body. Amnesty International की 2004 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डिजास्टर के पहले 2-3 दिनों में ही 7,000 लोगों से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी और lakhs and lakhs people were injured. In last 40 years, MIC एक्सपोजर से रिलेटेड बीमारियों के कारण 15,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और आज भी 1 लाख से ज्यादा लोग they are suffering from chronic illnesses. In 1985, the government passed the Bhopal Gas Leak Disaster Processing of Claims Act, which granted itself exclusive rights to represent the victims and handle the compensation claims. Despite the initially demand of $3.3 billion, the government could only settle out of court with Union Carbide in 1989 for merely $470 million, with leaving people with little amount. What is the present scenario? The tragedy didn't end with the immediate victims. The toxic waste it left behind at the UCIL site, it still poses a massive threat. Hundreds of tons of chemical waste still remain there that contaminates the groundwater in nearby residential areas. Studies में ये पता चला कि water contains the heavy metals and toxic substances which are linked to cancer and other diseases. NGT ने recently March 2024 में ये point out किया कि around 337 metric tons of waste from the disaster it remains on site. And during the rainy season, ये chemical it seeps into the river and soil and pollutes the water sources and spreading harm even further. Despite the court's order, the waste is yet to be disposed of properly. That shows a lack of seriousness by the authorities involved. हम हर साल 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में मनाते हैं ताकि भोपाल गैस ट्रेजेडी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जा सके और पॉल्यूशन कंट्रोल की इंपॉर्टेंस को समझा जा सके. बट क्या हम पॉल्यूशन कंट्रोल में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं? Today, if we see in Bhopal, the average AQI these days is 280, which is unhealthy. If you talk about the other city, which is Delhi, it tops the chart of the world's most polluted cities, and the air pollution in the national capital turns it into a gas chamber every year. तो pollution सिर्फ एक environmental issue ही नहीं है, बल्कि एक health crisis भी है. The Bhopal gas tragedy serves as a dark chapter in history, a lesson on the dangers of negligence and the price of industrial irresponsibility.